persons and teachers. We welcome you all in the city food courtyards and expecting from you to gain maximum at the career guidance program. You can guide the maximum student. Before guiding, you must learn it. And our resource person is well known to me in the academic field and well versed regarding the concerned subject. You will be able to, and you must take the benefit of this program. You enrich yourself. At the same time, this enrichment what you get from the program, pass on to the students, and in turn, it will be a path for the life to the student. Once again, I welcome you and thank you. Thank you, sir, for your kind and inspiring words. Finally, the moment we have all been waiting for. Our expert resource person, Ganesh Kumar Singh, sir, and Ram Milan Kumar, sir, will now take us through this important session on career opportunity and guidance. Please join me in welcome them with a huge round of applause. Director, CD4, सर माइक क्या हो गया आवाज़ and my colleague, co-resource person of this training station, Sri Ram Milan Kumar. First and foremost, I would like to आवाज़ बढ़ाइए First and foremost, I would like to extend my thanks on behalf of CBSE COE Patna that all of us have assembled here for some particular reason, particular cause. What is my impression? And in a year, generally, I conduct 50 to 20 workshops in an academic session. And what I have felt, that majority of the teachers are taking it just like a burden that the school has sent, target has been fixed, and anyhow we have to complete this target. Means 50 hour training target has been fixed. But what is the motto and objective behind it? Generally we forget it. At the beginning of this session, I would like to request you all that all of you have left your school, left your home, have come here. And we are going to take, we are not a resource person, we are just like a facilitator. We are here to exchange the ideas. That means I am here, both of us are here to exchange the ideas, exchange the views. We are not the preacher. We are just like a facilitator
to facilitate this program. And ultimately, at the beginning of this session, you can see this is the topic of career guidance. And it is also known as guidance and counseling. So at the beginning of this session, I would like to describe the objective of this program. That we all are teachers and we are dealing with a student. We are facilitator, we are philosopher, we are guide, we are motivator, we are subject expert. And we are dealing with a student. And I think that all of us who assemble here, they are from the different subject background. Means some basic knowledge we have so that we can impart the student. And one thing I would also like to present here like a disclaimer. Generally what happens that directly we guide a student that you have to be a doctor, you can try in engineering. This is not the duty of a teacher. And in this course we are also going to discuss about it. Many times it happens that we say तुमसे नहीं होगा, तुम ये कर नहीं सकते हो, तुमको ये करना चाहिए. So this is not our duty to directly instruct anyone. This is the counseling that we have to make them aware that you should try it. We should give the information. Let the student decide about herself or himself. Generally, we are committing this mistake. And step by step, in this session, we are going to learn that how we can help the student to acknowledge, to explore, to choose the right path. Because all of us have faced the many problems in our life, what to choose, how to choose. And generally, it has been said about this teaching profession. Whenever I interact with any social science teacher, everybody tells I was preparing for civil services. And later I completed my B.Ed and now I am teaching history, I am teaching geography and I am teaching political science. मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बसर मैंने जिंदगी कर ली. और अकबर इलाहाबादी के शब्द में कि मेरे आहे अहबाब क्या नुमाया कर गए, दिए हुए नौकर हुए, पेंशन लिए और मर गए. So we have to think beyond it. This is not the traditional jobs. When we talk about the ancient time, there are 4 traditional professions. The first profession is teacher. अरिस्टोटल भी टीचर था, प्लेटो भी टीचर था, चाणक्य भी टीचर था. Means there are 4 traditional professions: teacher, lawyer, doctor, engineer. Traditionally, there are 4 professions. Nowadays, we can find the many number of the professionals. Every sphere of life, one professional is required. For example, that you have started to construct a building, for that architecture is required. You have completed the hardware type work, this construction of building has finished, and after that interior designer is required. Interior designer is required or not. For example, if you are planning to set up a garden, for that a planner is required. Means every sphere of life, one particular professionals are required. Now there are not only the 4 professionals. They are not only the 4 professionals. And one thing also at the beginning of this session I would like to tell you. As far as guidance, there is a difference between guidance and counseling. Counseling is having the short spectrum. Guidance is having the broad spectrum.
Means every sphere of life, some guidance is required. When a student inducted in a job, after that also guidance is required. And guidance is limited not only for the career, in every sphere of life. मैरिज के लिए भी गाइडेंस चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रिलेशन हो उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए, पत्नी और माँ के बीच में कैसा रिलेशन बना के रखना है उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए. मीन्स एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ गाइडेंस इज एंड नेचर ऑफ काउंसलिंग इज आल्सो टोटली डिफरेंट. फॉर एग्जांपल कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग, तो दैट इज द एडमिशन काउंसलिंग. That is the admission counseling. For example, if you are going to a physician, that is also like a counseling, or consultancy. That is also like a counseling. That you have paid the fee. डॉक्टर साहब देख नहीं रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, एक मेडिकल काउंसलिंग आप भी कर रहे हैं. तो उसी तरह से whenever in school we face the behavioral problem of a child, for that counselor is there. One counselor who is being appointed in any school, either they have completed the diploma in guidance and counseling, or he or she must be the MA in psychology. That can be the trained and professional counselor. But here, for what we are here, that we should brief the student. We must be also updated about it. Then we can guide our student. Otherwise, it will be very difficult. Many times it happens that मुझे उस बारे में जानकारी ही नहीं कि ये भी होता है. मुझे इस चीज की जानकारी भी नहीं थी कि ये भी होता है. There are many talented people. They have missed this chance. If someone is in the good job, it means not that they are more talented. The super talented students were lying somewhere, but they were not aware. They could not click on the right time. So, as a teacher, this is our responsibility that we should make aware कि हमारे पास ये भी avenues है and everybody should try. उसके बाद क्या होता है कि generally we have seen that मौसी का बेटा अगर इंजीनियर हो गया, IITian हो गया, तो विदाउट एनी रीजन देयर इज ए प्रेशर. अब उनके सारू का लड़का हो गया IITian, अब दूसरे सारू का लड़का जो है वो थोड़ा सा मैथ में अच्छा नहीं है, लेकिन प्रेशर पूरा है कि तुमको भी उसी की तरह बनना है, तुमको भी उसी की तरह बनना है, एंड यू हैव टू बी लाइक दिस वन. Friends, in this session, we are going to deal all these things step by step, and now we are going to start. Means, what are the objective of these 2 days? Just I wanted to present the crux that in this session we are going to know, we are going to empower ourselves that how we can guide students to realize their own potential. मुझे ये भी नहीं करना है कि तुमसे ये नहीं हो सकता. We have to show them this is your choice. Sometimes attitude and aptitude. आप किसी से बात कीजिए तो खास करके बिहार एंड यूपी हिंदी हर्टलैंड में 70% बच्चा बोलेगा कि मैं IAS ही बनना चाहता हूँ. 70% बच्चा IAS बनना चाहता है, और या IITian बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे IAS बनना है. 70% बच्चा. क्यों? क्योंकि उसने अपना एटीट्यूड बनाया. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे मन की वृत्ति है. एप्टीट्यूड जो हमारे अंदर है. तो सबको ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या है और हम क्या होना चाहते हैं. डायरेक्टली वी शुड नॉट टेल कि तुमसे नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो सकता है. वी शुड अवॉइड इट, एंड आफ्टर दैट देयर आर मेनी एवेन्यूज. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द one incident that 4 or 5 years back
there was a golden jubilee celebration of Sainik School Tilaiya. And I have seen on that occasion the many number of stalwarts, means old students assembled there. Many judges were there, Supreme Court judge, High Court judge, around 50 or 60 IS officers were there. And Vice Chief of Army Staff, means high rank holder officers of Air Force, Indian Navy, they all were there. And one boy was there. And I have seen all the IS, all the judges were standing in a queue to take the autograph of a person. And that boy was not a good and bright student of his class. And his name was Prakash. प्रकाश साहब वहाँ पर थे, वो फिल्म डायरेक्टर थे. वहाँ पे मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी उसके ऑटोग्राफ के लिए थे. और वो अपने क्लास का अच्छा स्टूडेंट नहीं था, स्किट में पार्टिसिपेट किया करता था. और लोगों ने उसको, एनडीए उसका हुआ नहीं, लोगों ने उसको लाइटली लेना शुरू किया. अब प्रकाश झा के इशारे पे कैटरीना कैफ नाच रही है, माधुरी दीक्षित डांस कर रही है, और उसके लिए सारे लोग पड़े हुए हैं. When Prakash Jha was the student of that school, the teachers have not taken seriously. उसको तो एनडीए में भेजना था, जो एनडीए में गया वो कमाल का है, बाकी बेकार का है. This concept was there. Means there are many avenues and anybody can do wonder. जनता हवलदार भी हो सकता है. This is not the job. And one thing more I would like to clear, कि कभी कभी हम कहते हैं कि जॉब, ड्यूटी, वर्क. जॉब क्या है और ड्यूटी क्या है? कि व्हाट वी डू फॉर मनी, दैट इज जॉब. जब हम कहते हैं कि ड्यूटी, व्हाट वी डू फॉर लव, दैट इज ड्यूटी. तो बाद में जो प्रॉब्लम होता है, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई. क्यों? जिंदगी भर लोग तड़पते रहते हैं, मैं ये करना चाहता था, वो नहीं कर पाए. तो वो नहीं होना चाहिए. काम बोझ किसको लगता है कि हम बनना कुछ और चाहते थे, कुछ और हो गए. तो वो क्या होता है कि जिंदगी भर वो दर्द सालती रहती है, वो पीड़ा जो है मन में रहती है. आपने देखा होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑन फायर में लिखा है कि एक आदमी जो अपने जीवन में लॉयर बनना चाहता था और वो साहित्यकार बन गया. एक आदमी जो अपने जीवन में लॉयर बनना चाहता था, वो साहित्यकार हो गया, एक साहित्यिक बने. तो उसमें क्या है कि आप उसकी रचनाओं को जब पढ़िएगा तो आप में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. वो बनना चाहता था लॉयर, बन गया साहित्यकार, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. ये उसी तरह से है कि जैसे खाना किसी ने बनाया, खाना का टेस्ट भी है, लेकिन अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन उसी आदमी से आएगा जिसके मन में प्यार हो. जिसके मन में प्यार हो तो आप उसके खाना को भी खाइएगा, जो खिलाने वाला है, तो आपको उसमें अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो वही है कि जो हम दिल से करना चाहते हैं, अगर वही चीज मुझे मिल जाए तो काम कहीं भार नहीं. थॉमस अल्वा एडिसन कहा करता था कि दुनिया समझती है कि मैंने इतना काम किया, मैंने काम किया ही नहीं. मैंने जिंदगी भर मौज मस्ती की और उसी मौज मस्ती को लोगों ने काम कर दिया. मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने मौज मस्ती की. तो जो आप करना चाहते हैं, अगर आप वही करते हैं तो आपकी जिंदगी कभी भार नहीं होगी. ये नहीं होगा कि तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई, वो दर्द नहीं होगा. आप हमेशा खुश रहिए. तो बच्चों को ये भी बताना है कि जो उसमें इंटरेस्टेड हो उसको रियलाइज करवाना है. उसको ये नहीं कहना है कि तुम डांस ही करो, तुम ड्रामा ही करो, तुम ये ही करो, तुम वही करो. ये नहीं, उसको रियलाइज कर पाना है. तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं. अब now I am going to hand over the microphone to my colleague Sri Ram Milan ji. That introduction session will start. And one thing is there, if your name starts with P,
आपका नाम एल से स्टार्ट होता है, आपका नाम बी से स्टार्ट होता है, तो आपको अपने मन में एक प्रोफेशन भी चुन के रखना। जैसे एल से स्टार्ट हुआ तो लॉयर एक प्रोफेशन है, तो आपको ये चुन के रखना है, सोच के रखना है, और उन सारे प्रोफेशन को उस बोर्ड पे लिखा जाएगा। जैसे सी है, सी से नाम है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब जितने भी आपको सोच के रखना, और उसी के हिसाब से शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, आइए। Thank you, sir. So now we are going to start. Just now you have listened for what we are here. This is a session on career guidance. Sir has elaborately told you what is the difference between guidance and counseling. So you understand everything. Now we are going to start the practical things. You'll find we are having a This is first icebreaker. What we are having, as sir have introduced the activity, what you have to do is, one by one you have to tell your name, and by the first letter of your name, what you have to do is, you have to name your profession, and that will be written. That's it, I'll be keep on writing here. So I will start from this side. Ma'am? Just pass this mic to students. एक एक आदमी को माइक देते जाएंगे, अपना नाम बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे, और अगले आदमी को माइक देंगे। Speak loudly. Yes, take microphone. Myself, Ruby Das. Yes. Ruby Das, and by R you have to make a name a profession. एक प्रोफेशन का नाम बताइए। Rocket engineer. Rocket engineer. Sir, it is Aviation sector. rocket engineer. Okay. Pass on the mic. Myself, Preeti Sinha. एक प्रोफेशन का नाम बताइए जो आपके नाम के पहले लेटर से start है। काफी पॉपुलर है, इसे आप तो बोल सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो जहाँ लिखा गया दैट मस्ट नॉट बी रिपीटेड। आप बोलिए, मैं हेल्प करता हूँ। हवाई जहाज कौन उड़ाता है? हाँ? हाँ?